Yes, sir. So let's see. So acceleration, we have the two relations. One is this, one is this. This is in terms of time, this is in terms of position, and maximum value of acceleration in magnitude will be omega square A, where Vmax was omega into A. So if I ask you ratio of Amax upon Vmax, Amax कितना है omega square into A, Vmax is omega into A, so one omega will be remaining. अगर रेशियो पूछा जाता है Amax and Vmax का, it is omega. Can we write here? Ratio of Vmax and Amax is omega. That is itself is the objective question. देखिए, ratio of Amax, we are talking about magnitude, है ना, and Vmax, उसका भी मैग्नीट्यूड साइन नहीं लेंगे. वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा जब डिवाइड किया जाता है तो देयर शुड बी ऑलवेज मैग्नीट्यूड का रेशियो, है ना. तो दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना है? ये ओमेगा स्क्वायर ए है, दिस इज ओमेगा ए, ऑलरेडी वी हैव सीन यस्टरडे, ओमेगा. तो रेशियो इज रेशियो ऑफ दिस बोथ वी ए मैक्स एंड वी मैक्स विल गिव यू ओमेगा. तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज 2 पाई एफ, अगर इनकी वैल्यू दी होंगी तो डिवाइड करके ओमेगा निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ, which is also equal to 2 pi by t. Time period भी निकाल सकते हैं. So we can use this relation to get the frequency, time period, and angular frequency as it is we are getting it. Okay. Now, okay, this is okay. यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Now if we use this relation, इस relation को we can write it like this also. You see, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हेडिंग लिखते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन इन SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, है ना. Differential equation of SHM. Why we call it differential equation? Because acceleration को हमने differentiation form में double differentiate लिखा है. Since acceleration is given by this relation, just now we are discussed, and or acceleration is nothing but a second derivative of displacement. तो acceleration को हम ऐसे लिख सकते हैं. What we get is this. Right side में minus omega square x, or it can also be written like this, d2x by dt square. इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, it will become plus is equal to 0. So differential equation of SHM is written like this also, like this also. Both are same. So if this type of situation is there, second derivative of displacement, ये constant है, omega is constant, some constant, then followed by single power of x. यहाँ भी x, यहाँ पे x का सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड दो बार डिफरेंशिएशन करना है, और इधर भी x है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और माइनस है. तो दिस रिप्रेजेंट द SHM इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, एंड दीज बोथ आर सेम. ठीक है. इट इज समवट सिमिलर टू द फोर्स इक्वेशन ऑफ SHM. ऐसा था ना कुछ, x वहां भी माइनस था और सिंगल पावर था. यहाँ पे कांस्टेंट इज चेंज, कांस्टेंट इज चेंज ना, ओमेगा स्क्वायर हो गया कांस्टेंट. Like this. So based on that, you have the question in NCERT book, question number 6. Can you see this question? Which of the following relationship between acceleration A and displacement x of the particle involve simple harmonic motion? Can you see it? Yes, sir.
क्या आंसर होगा बोलिए? Sir, the second one. सेकेंड वन में स्क्वायर है भाई, इसमें स्क्वायर नहीं, सिंगल पावर है। Why is there the problem to identify very simple question? Everything is right in front of you. Can't you pick up the right answer? Nobody. Sir, क्या problem C. है? फिर why can't everybody reply? C. Can't you see C is the correct option? देखो यार, इससे देखो ना, A is here. This is minus is also there, and omega is constant. ये इधर है, and sorry, ये वाला यहाँ पे देखो, and X is here. तो माइनस भी होना चाहिए, A and X का सिंगल पावर है। या अगर ये if you are seeing this relation, this is also the relation, X का relation है, sorry A का relation है SHM का, तो this is given in fact, ठीक है। तो ये ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। All three are one. Omega is constant है ना, constant angular frequency, constant है, main point is that. Clear to everyone? Yes, sir. Option. Now, can I add one more part in this? Second part, may if I ask you, find angular frequency of SHM in this case. बोलो। Angular frequency of SHM. So we have come to know this is the correct relation. Since as A is equal to minus 10x, तो angular frequency क्या कितनी आएगी? इसको किससे कंपेयर करेंगे? Compare with A is equal to minus omega square x. So what we get is omega square is equal to 10. Sir, under root of minus 10. तो ये नहीं, प्लस ये जो है Plus. means therefore omega will be root of 10. अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है, बट यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस वाला टर्म सेलेक्ट होता है, minus 10 Sir, नहीं it cannot be minus, right? Because it's under root. So अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता है, बट बाहर तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। When we take the under root, suppose if you have x square is equal to 10, therefore x will be plus minus, okay, x square is equal to 100, so x will be plus minus 10, because yes, if you square both sides, it is going to be 100 only. So when we take the under root, outside plus minus should come, but यहाँ पे प्लस लिया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, माइनस में नहीं लिखी जाती एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ द टर्म्स आर नॉट माइनस, तो देयरफॉर विल नॉट माइनस। अगर वेलोसिटी होता तो आप लिख सकते थे। ऑफ कोर्स एंगुलर ये एंगुलर वेलोसिटी है, ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है तो वो प्लस माइनस हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी को जनरली इज रिटन प्लस। अगर वेलोसिटी है, सपोज if we take the velocity, v square is equal to 100, then v will be plus minus 10, because velocity can be positive also, negative also, depending upon the direction of motion. ठीक है,
Sir, Yes. is there any way by which angular frequency can be negative? Like not on, I guess it's not possible on Earth, but anywhere else, is it possible that it can be negative? We have to think about that particular physical quantities. उस quantities के बारे में सोचना पड़ेगा. Then you can apply. है ना? अगर ये angular speed हो जाए तो negative हो सकता है. अच्छा, angular speed is also denoted by omega, you know. But angular Yes, sir. frequency which involves the oscillations, है ना? Sir, तो because इसलिए negative नहीं हो सकती. yes, sir, because I just thought that particular particle cannot oscillate in negative terms, right? So We are yes, sir. interested in oscillations. It is somewhat related to oscillations, है ना? Frequency Yes, sir. के omega is 2 pi f, है ना? तो frequency multiplied by 2 pi give you angular frequency, है ना? तो it is involving the oscillation, whether anti-clockwise or clockwise oscillation. So we have to take it positive. And anyway, Yes, sir. yeah, all right. Yes, sir. One oscillation, number of oscillations per second we call it. That is frequency. उससे angular frequency बनती है. ठीक है. जैसे sometimes जैसे time हम बोलते हैं time should be always positive. But हमने देखा था in one sense one of the numericals in impulse का question था ना, ऐसा कुछ ग्राफ था. यहाँ पे t is equal to 0 था, तो बोला था when t is negative less than 0, how much is the impulse? So line was coming like this. So 0 impulse was there. So in that case, t can be negative also with respect to certain reference point. So sometimes things can be negative, but when they are generally always positive, but sometimes they become negative. We have to just think about that particular case in which reference they are talking. चलो आगे देखें. This is okay, clear to everyone? Question number 6 of our Yes, sir. textbook. All right. So only C part. You have to do this. Extra part हमने किया यहाँ पर. This can be useful also. Okay. Unit क्या होता है? इसका unit है angular frequency का angular frequency है ये. तो per second और radian per second भी लिख सकते हैं. Similar to that of angular speed. Sir, can it be written not SI unit, I think, but degree per second? Can it be done like that? डिग्री पर सेकंड फिर आपको वहां पर दूसरी वैल्यू भी डिग्री में पुट कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, सो दैट इट शुड Yes, गेट कैंसल. अदर थिंग्स शुड बी प्रॉपर्ली ऑब्टेन्ड, है ना? ठीक है. yes, sir. चलो, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. एंड देखो ये भी क्वेश्चन, इट इज गुड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का है. क्वेश्चन नंबर 24 वी आर टॉकिंग अबाउट. एक्सरसाइज का 24th है. बॉडी डिस्क्राइब्स सिंपल हार्मोनिक मोशन with an amplitude 5 centimeter. Let's see answer are given in centimeter में दिए, तो we have to convert it. इसको convert करना पड़ेगा. Sometimes they give the option in centimeter, so we don't have to convert. But better to convert in SI unit and so on. Amplitude का symbol बोलिए. AN 10 to the power -2 meter. Time period is also given 0.2 seconds. Find the acceleration and velocity of body when the displacement is, so various displacement के लिए one part can we do it, just a part कर लेते हैं ना, others you can do it homework. X is equal to 5 centimeter. ठीक है. तो what is the formula used for acceleration का formula बताइए पहले. Which formula we are going to use for acceleration here in this case? Sir, I don't think the regular one will work. अभी derive किए ना, why you are interested in regular? अभी we are derived the relations for SHM, तो वो यूज कर सकते हैं ना. अभी जब हमने डिराइव किए, क्या था एक्सेलरेशन का फार्मूला, बोलो जल्दी से. अभी देखो, अभी हमने डिस्कस भी किए. क्या था एक्सेलरेशन का फार्मूला? पोजीशन के टर्म में चाहिए, टाइम के टर्म में नहीं, एक्स के टर्म में. बोलिए फास्ट. ओमेगा स्क्वायर एक्स.
Yeah, but omega is not given. Time period is given. Yes, sir. ओमेगा That's को what I क्या लिख thought. सकते हैं? 2π/t. Yes, sir. ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं और x. नाउ वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज. -2π/2. t कितना है? 0.2 सॉरी का होल स्क्वायर इंटू x कितना है? 5 सेंटीमीटर. तो 5 × -2 है ना. तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 10π. ये हो जाएगा 100π² इंटू 5 इंटू 10⁻². ये कैंसिल हो जाएगा 100 के साथ. तो एक्सीलरेशन इज -5π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो ये Yes, sir. आपका एक्सीलरेशन आ गया. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? Sir, just omega x. Omega x is for the maximum velocity. It is not the maximum velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे, जहां पे x = 0 होता है, यहाँ पे मिलेगी आपको मैक्सिमम. तो we can't we have to use the general formula. It will give you all the velocities, all the required velocities, whether maximum, minimum. क्या फार्मूला है अभी में वेलोसिटी का? SHM. We are talking about SHM. Don't say me, sir, speed upon time or rate of change. Already we have derived the formula. है ना? क्या फार्मूला है वेलोसिटी का पोजीशन के टर्म्स में? Come on, be quick. Sir, omega a. नोट्स नहीं करते, कितने बार डिस्कस किया ओमेगा ए. ये है फार्मूला. इतना रिपीट करने के बाद भी why can't you learn this? Why can't you note and reply? It means you are not noting the things. Therefore answers are not coming. ये फार्मूला है ओमेगा 2π/t. a कितना है? a and x both are same. It is going to be 0. दोनों सेम है. Whole thing becoming 0. Got it? Like this. Can you complete all the part? ये वाला भी, इसमें बस x की वैल्यू 3 पुट करना है. 3 × 10⁻². और इसमें x की वैल्यू 0. Can you do the other B and C part on your own? Formula remaining same? Yes, sir. फार्मूला सेम यूज होगा. x की वैल्यूज चेंज हो रही. ठीक है. लेट्स चेक द आंसर फॉर दिस पार्ट ओनली. -5π² मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही है और ये 0 है. यस. ठीक है. तो अदर पार्ट्स के आंसर भी आप मैच कर सकते हैं इसके साथ. कैन यू सी आंसर्स आल्सो? Yes, sir. So this you do complete it. It will give you the practice for calculation also, and as well as formula will also. You can remember when you write many times, then you remember the formula. All right, shall we move on to the next? Yes, sir. Okay. So this can be important question because formulas are different here. तो ये आप लर्न करिए फार्मूले भी और प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन नंबर 24 डन. और इसमें भी वन पार्ट वी कैन डू. दो क्वेश्चन नंबर 5 we can discuss question number 5. Sing one part, other part you have to do your own. देखो, particle is in linear simple harmonic motion between 2 points A and B.
So let us make 2 point A and B. Okay. 10 centimeter apart. Total distance 10 है ये. Take the direction from A to B as positive. A to B की डायरेक्शन क्या लेनी है? हमें पॉजिटिव लेनी है इधर की डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये B to A will be negative for vector quantities. Give the sign of velocity, acceleration, and force on the particle when it is at end A. यहाँ पे पार्टिकल है, मीन पोजीशन बीच में होगी ये. This is the mean position. All right. When the particle is at A, what will be sign of velocity? Velocity क्या होगी? V will be, V का साइन क्या होगा? और एक्सीलरेशन का प्लस या माइनस, एंड फोर्स का प्लस या माइनस. बताइए V का साइन क्या होगा? एट ए, एट पॉइंट ए. टेबल बना लेते हैं, बाकी आप कंप्लीट कर लेना बाकी पॉइंट्स. ठीक है, बोलिए. ए पर आपको बताना है, बी पर खुद करना है, एंड बाकी पार्ट भी खुद करना है, पार्ट भी खुद करना है. वेलोसिटी ए पर क्या होगी बोलो? आर यू देयर? सर 0. Sir, negative. ए पर नेगेटिव कैसे? नेगेटिव मींस इट इज गोइंग दिस साइड, फर्दर लेफ्ट जा रही है. ए द एंड ऑफ इट्स जर्नी. सर 0. एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ए. गिवन इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो ए पे रुक जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना. तो नो साइन, प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा उसमें. वेलोसिटी जो होती है ना, when it moves then it will attain some direction. जब रेस्ट पर है तो we cannot say, है ना. Next we can say next moment it is going to move towards right, but A पर है उस समय neither moving left nor moving right, neither plus nor minus, so it is 0. ठीक है. What about acceleration? सर positive. Towards right. Sir, because towards right ऐसा. is positive. So yes, sir. Of course, acceleration is always towards the mean position. हमेशा mean position. Even if you don't know, you can use your common sense. If you write this side acceleration, the object should go this side. All right. We were talking about the force, direction of force. It will have same direction as that of acceleration, because force इधर ही लगेगा तभी तो acceleration इधर ही होगा, right side में होगा, है ना. Acceleration will be followed by the force. When force is this side, then only acceleration will be produced in same direction. Force and acceleration always will have same direction. तो हमने लिखा था beginning of lectures में, force is always towards the mean position. नहीं, force and displacements are in opposite direction. Displacement यहाँ पर इस तरफ है, तो force will be towards center, towards the mean position. Always remember, in SHM, force and acceleration will always be towards the mean position. जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंच जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, फोर्स भी इधर हो जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ. ठीक है. तो अदर पार्ट्स यू हैव टू डू योर ओन. कैन यू कंप्लीट अदर पार्ट्स? Yes, sir. We'll try. All right. Yes, sir. More you try, more you improve. And don't see the answer. पहले आप टेबल कंप्लीट कर लेना, then you check your answers, है ना. Then you do the corrections. पहले ऐसे नहीं की, पहले देखना आंसर. If you don't that if you see the answer, then you will not improve. पहले लिखना है, then you see the answer.
write your Sir, own, then you check. Okay, हाँ बोलिए. sir, I have a doubt with the C option. C option. कहाँ पे C? क्या दिया C में? Midpoint of A, B and going towards A. यहाँ पर है और इधर जा रहा है. Main position पर है and heading towards A. Sir, क्या है so बताओ C पर? velocity will be negative. Okay, C यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. चलो एक मिनट. यहाँ पे हाँ, velocity will be negative. Yes, क्या सही है, negative velocity. And sir, acceleration will also be negative. Acceleration का formula क्या है? A is equal to minus Yes, sir. So omega that's what I square had a x. doubt. Sir, it will be positive, I think. अरे x 0 होता है ना, मेन पोजीशन पे x is 0. x is 0 at mean. मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ना. क्या आंसर है फिर? Sir, so acceleration will be 0. Yes. And force will also be 0. ठीक है? Okay, sir. Let us see the answer of A and C. A में क्या लिखा है? 0 प्लस प्लस. ठीक है, 0 प्लस प्लस. और C में माइनस 0 0. ठीक है, तो माइनस यस सही है. ठीक है, ओके. So you can complete all. These can be useful questions. You know, these are the basics. Point of SHM. Everybody is supposed to know. This can be asked in competitive examinations. Being part of the NCERT book, anything is asked in JEE, NEET examination, and JEE examination. Okay? So you have to do all the parts on your own. Okay. Shall we move on to the next? Yes, sir. Okay. So देखो. Let's see what is next. Now, most probably we can discuss the energies in SHM. Or let's see what is the next one. ये क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ. ये थोड़ा सा मैं सॉल्व एग्जांपल बता दूं आपको. कैलकुलेशन पार्ट. Those who are finding difficulties in this calculation of this trigonometrical ratios की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका. यदि ये क्वेश्चन है, देखो आपके सामने. I'll give you just one point only in this. Body oscillates with SHM according to the equation, this equation. All values are in SI unit. तो ये इक्वेशन दी आपको. आई टोल्ड यू यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है. डजंट मैटर, यू डोंट वरी अबाउट दैट. कॉस एंड साइन बोथ विल डू, बोथ आर इंडिकेटिंग द एसएचएम. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें एक पार्ट जस्ट विल कंप्लीट. जस्ट अ मिनट. या तो इसमें क्या बोल रहा है? एट t is equal to 1.5 सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. तो पुट कर दीजिए t की वैल्यू 1.5 यहाँ पर. तो इट विल बिकम, एक मिनट, तो क्या आएगा? कैलकुलेशन पार्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. क्या आएगा यहाँ पर? x इज इक्वल टू 5 cos कितना, एक 2 पाई है ना, 12 पाई नहीं 2 पाई, 2 पाई इंटू t. t इज 1.5, तो 3 पाई हो जाएगा. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 पाई प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो? कैन यू टेल मी? Cross multiply. क्रॉस किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बताओ? देखो 2 पाई क्या होता है? 2 पाई में जैसे साइक्लिक, ये 2 पाई में पूरा एक, वी कम बैक टू द एक्स एक्सिस अगेन. देखो यहाँ से सपोज स्टार्ट किया आपने, ठीक है, 2 पाई पूरा हो गया आपस, यू कम हियर. Yes, sir. तो 2 पाई मीन्स एज गुड एज नो चेंज. इसको 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं. तो 2 Yes, पाई sir. मीन्स यू कम टू द 0 अगेन. तो ये छोड़ सकते हैं इसको. इट बिकम 5 cos
पाई प्लस पाई बाय 4 ये हो जाएगा, है ना। तो कॉस sir. पाई प्लस पाई बाय थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कितनी होती है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, Negative, sir. -5 कॉस पाई बाय 4। तो ये आ जाएगा -5 cos pi by 4 is 1/√2, और 1/√2 is nothing but a 0.07 होता है, 0.707 होता है, तो we can just leave other digit 0.7 लिख सकते हैं। तो it is minus 3.5 मीटर। ठीक, स्पीड निकालनी है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। स्पीड कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt, है ना, या फिर हाँ ठीक है, इसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, नो अदर को। तो डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया था, कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस का Sine साइन हो जाता है minus, डिफरेंशिएशन में। sir. और 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 ये इसको डिफरेंशिएट करना है। चलो बता देता हूँ। देखो जैसे हमने डेरिवेशन किया था ना, थिंक अबाउट दैट। तो 5 तो आगे आ जाएगा, और dy/dt, और ये क्या है? कॉस, ये वाला 5 को आगे शिफ्ट कर दिया, ये लिख लो, कॉस 2πt प्लस π/4। कैन यू सी इट? नाउ डिफरेंशिएट करना है हमें। तो 5 तो बाहर आ चुका पहले, होल थिंग बिकम्स साइन एज इट इज। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, है ना, साइन एक्स, है ना। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स।